Okay, in this case, my application under order 8 rule 1A for production of documents at the time of examination of the defendant, time defendant number 1, has been rejected on the ground that photocopy of the will is cannot be produced. So without giving me opportunity to file the original, Lordship. Lordship, what has happened? The plaintiff filed a civil suit for declaration of 1/7 share, Lordship, uh, about all the ancestral properties. Now I filed my counterclaim. My counterclaim is based on will only, will alone. That one of the property out of all ancestral properties, I am holding a registered will of my father. Now that will I sought to be produced at the time of examination. कोई बात नहीं, इनको क्रॉस एग्जामिनेशन में बता देना, इनको क्रॉस एग्जामिनेशन में बता देना, आ जाएगी रिकॉर्ड पे। No, Lordship, दावे करने में this is बता settled. देना कि देखो बिल है, Both things are फिर settled. अपने दावे प्रूव कर देना अपने। सब मेरा तो काउंटर क्लेम उसी पे both are settled position of law that the photocopy, if the photocopy is Written statement. what, because this is one more thing I wanted to point out. Though it is a leave of the court, but it has to be exercised judicially. Lordship, I just wanted to point out certain things. The plaintiff filed a suit now for declaration of share of 1/7 share, and he also filed a suit for declaration of will as null and void. So he never produced any copy of will, he never filed any application for production of will. Now, what has happened when the issues were framed? The plaintiff filed The same will. Same will. Right, the same way he has asked for the relief for declaring it as null and void. Yes. Now, what has happened? What is all? आपको तो फायदा है. That's all I say is he may withdraw with liberty to file certified copy or the original. Because the court has said that the कर दिया. हमको फ्रेश एप्लीकेशन लगा. नहीं, विल के बारे में सर केवल ये लिखा है कि फोटोकॉपी हैज बीन फाइल्ड। हाँ, नहीं और साथ में ये भी लिखा दूसरे डॉक्यूमेंट्स के बारे में कहा है कि सर्टिफाइड कॉपी आपने फाइल की। विल फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैड टू फाइल विद द रिटन स्टेटमेंट। नाउ with the leave of the court, if they were filing, they had to file original. I'll file it. They file, and in the application they say, first they say that I have not filed the copy, and then they say कि I am ready to file original. Otherwise, also I would not be in a position to allow that on a photocopy. I can give you liberty to file a fresh application along with the certificate. Lordship, that is what I. Let it be dealt by. That is what I am asking for. And the other document that I filed at is the outset, learned counsel for the petitioner submits that the petition has been filed against the impugned order so and so, filed in so and so by so and so, whereby the application under order 8 rule 1A CPC has been rejected by denying the production production of the document on the ground of photocopy. On the ground that the document is a photocopy, in bracket will. It is submitted by the learned counsel for the petitioner that the sole case is based on will, as the respondent plaintiff has also has also paid relief for declaring said will as null and void. The application has been rejected solely on the ground that the photocopy has been produced in place of the original or certified copy of the will. He prayed for a liberty that he may be allowed to file a fresh application along with the certified copy. Oblique original. I'll file it. The prayer seems to be reasonable, and accordingly the petition is disposed of with the direction to the trial court that in case such application is filed by the petitioner defendant for taking document in bracket will on record, the certified copy original of the will on record, that shall be dealt in accordance with law. वो तो फाइल किया है, वो तो आप करेगी कम से कम कोर्ट अलाउ सबके वो भी. In accordance with law, the prayer is not opposed by the
a respondent plaintiff for filing such an application. Full stop. Accordingly, एक और the डॉक्यूमेंट impugn order so and so is quashed. The application, the सर petition. क्वैश ना करें अदरवाइज तो अलाउ ही हो गया वो फोटोकॉपी रिकॉर्ड पे आ गई मतलब इम्प्यून ऑर्डर जैसा है वैसे ही रहेगा ठीक। तो रिकंसिडर होने के लिए क्वेश्चन तो करेंगे रिकंसिडर तो हो गई होगा सर ऑटोमेटिकली तो होगा वो क्वाश हो गया तभी तो रिकंसिडर वो हो डायरेक्शन क्वाश तो सब रिकंसिडर तो क्वाश होने के बाद ही होगा ये बोल रहे हैं वो तो फोटोकॉपी पे है ना, लिबर्टी देख रहा दैट है। ऑर्डर विल नॉट कम इन हिज वे ऐसा लिखा है अब एक बात It और is further observed that the trial court shall consider the application on its own merits without getting influenced by the earlier order. सर एक बात और एक डॉक्यूमेंट और फाइल था उसके साथ उसकी सर्टिफाइड कॉपी फाइल थी ऑर्डर 8 रूल 1 का क्या हुआ था कि इन्होंने ये बोलते हुए आए हैं कि वसीयत की हमको कोई नॉलेज नहीं थी जबकि इसके पहले एक लैंडलॉर्ड टेनेंट सूट चला था एविक्शन का उसमें हमारे फादर पहले ओरिजिनल प्लेंटिफ थे उसमें हम बाद में पार्टी आए विल के बेसिस पे तो हमने जब लोअर अपीलेट कोर्ट में जब फादर की डेथ हुई थी तो हम एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव एविक्शन सूट में हमने ऑर्डर 8 रूल 1 की एप्लीकेशन फाइल की थी ये विल भी फाइल की थी उसके साथ और उसमें ये लोग भी सभी पार्टीज थे बाकी के भाई भी थे तो इन्होंने यहाँ डिनाई कर दिया कि हमको बाद में पता चली विल तो ये प्लीडिंग दोनों की है प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों की हमारी भी स्पेसिफिक प्लीडिंग है कि इनको उस समय पता था क्योंकि पहले से एविक्शन सूट चल रहा था तो वो हम ऑर्डर 8 रूल 1 की एप्लीकेशन जो थी पुराने सूट की वो हमने फाइल विल के साथ फाइल करी थी वो भी ट्रायल कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी है ये बोल के कि उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया बस ये कि सर्टिफाइड कॉपी फाइल करी तो वो तो सर्टिफाइड कॉपी ही फाइल करेंगे ज्यादा से ज्यादा 13-10 की एप्लीकेशन लगा के हम उसको यहाँ पर उसको वेरीफाई करवा प्रूव करवा लेंगे फाइल तो उसकी 8-1 की तो एप्लीकेशन की सर्टिफाइड कॉपी फाइल कर वो भी डॉक्यूमेंट है। वो भी डॉक्यूमेंट है बस विल है और एक 8-1 का डॉक्यूमेंट दो ही डॉक्यूमेंट फाइल अरे ये इन्होंने लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स लगाई नहीं है बिकॉज दे हैव हमने डॉक्यूमेंट ही लगाया है दो डॉक्यूमेंट लगाए इन्होंने तो वही bill बस और एक वही तो application। दो ही डॉक्यूमेंट ही थे वही दो इसके अलावा डॉक्यूमेंट भी- लगाए मैंने उसके बारे में फिर इसमें लिखा हुआ है पेज 48 में काइंडली वो डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंट अब वो फिर देखना पड़ेगा फिर पूरा देखना पड़ेगा। छोटा ही सा है फ्रेश एप्लीकेशन के साथ वो भी लगा ठीक है हम वो भी कंसीडर रिकंसीडर कर लें सर एंड अदर डॉक्यूमेंट्स ऐसे And other documents कर देना fresh application, हाँ, liberty to file fresh application with other, विद ऑल द डॉक्यूमेंट with the documents which have been filed along with the earlier प्रीवियस application.